आज हम ऑसिलेटर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर, डीसी पावर इनटू एसी पावर, मैकेनिकल पावर इनटू एसी पावर, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है डीसी पावर इनटू एसी पावर। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस इज एलसी टैंक सर्किट, बाइसिंग सर्किट, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। Number 3 question. In an LC circuit, when the capacitor is maximum, the inductor energy is minimum, maximum, halfway between maximum and minimum, none of the above. तो इसका सही आंसर है minimum. Question number 4. In an LC oscillator, the frequency of oscillator is L or C, proportional to square of, directly proportional to, independent of the values of, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। तो इसका सही आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस ऑसिलेशन डैम्ड, अनडैम्ड, मॉड्यूलेटेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है अनडैम्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलसी ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसीज हाई, ऑडियो, वेरी लो, वेरी हाई। इसका सही आंसर है वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 7, हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, रेडियो ट्रांसमीटर्स, टीवी रिसीवर्स, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है रेडियो रिसीवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज आरसी सेक्शन, 2 सेक्शन, 3, 4, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है 3 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9, in an phase shift oscillator the frequency determining elements are L and C, R, L and C, R and C, none of the above। इसका सही आंसर है R and C। क्वेश्चन नंबर 10, a Wien bridge oscillator uses feedback only positive, only negative, both positive and negative, none of the above। इसका सही आंसर है both positive and negative। क्वेश्चन नंबर 11, the piezoelectric effect in a crystal is a voltage developed because of mechanical stress, a change in resistance because of temperature, a change in frequency because of temperature, none of the above। इसका सही आंसर है a voltage developed because of mechanical stress। Question number 12, if the crystal frequency changes with temperature we say that crystal has temperature coefficient positive, 0, negative, none of the above। इसका सही आंसर है positive। Question number 13, the crystal oscillator frequency is very stable due to of the crystal rigidity, vibration, low Q, high Q। इसका सही आंसर है high Q। Question number 14, the application where one would most likely find a crystal oscillator is radio receiver, radio transmitter, AF switch generator, none of the above। इसका सही आंसर है रेडियो ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, an oscillator differs from an amplifier because it has more gain, requires no input signal, requires no DC supply, always has the same input। इसका सही आंसर है requires no input signal। Question number 16, one condition for oscillation is a phase shift around the feedback loop of 180 degree, a gain around the feedback loop of 1/3, a phase shift around the feedback loop of 0 degree, a gain around the feedback loop of less than 1। इसका सही आंसर है a phase shift around the feedback loop of 0 degree। Question number 17, a second condition of oscillations is a gain of 1 around the feedback loop, no gain around the feedback loop, the attention of the feedback circuit must be 1/3, the feedback circuit must be capacitive। इसका सही आंसर है a gain of 1 around the feedback loop। Question number 18, the signal generator generally used in the laboratories is oscillator, Wien bridge, Hartley, crystal, phase shift। इसका सही आंसर है Wien bridge। Question number 19, an important limitation of a crystal oscillator is its low output, its high Q, less availability of quartz crystal, its high output। इसका सही आंसर है its low output। Question number 20, in an LC oscillator if the value of L is increased 4 times the frequency of oscillation is increased 2 times, decreased 4 times, increased 4 times, decreased 2 times। इसका सही आंसर है decreased 2 times।
is a question number 21 is a fixed frequency oscillator phase shift oscillator, Hartley oscillator, Colpit oscillator, crystal oscillator? इसका सही आंसर है crystal oscillator. Question number 22. Quartz crystal is most commonly used in crystal oscillator because it has superior electrical properties, it is easily available, it is quite inexpensive, none of the above. इसका सही आंसर है it has superior electrical properties. Question number 23. The Q of the crystal is of the order of 100, 1000, 50, more than 10,000. इसका सही आंसर है more than 10,000. Question number 24. In Colpit's oscillator, feedback is obtained by magnetic induction by a Tickle coil from the center of split capacitors, none of the above. इसका सही आंसर है from the center of split capacitors. Question number 25. In a Wien bridge oscillator, if the resistance in the positive feedback circuit are decreased, the frequency remain the same, decrease, increase, insufficient data. इसका सही आंसर है increases. Question number 26. For an oscillator to properly start, the gain around the feedback loop must initially be 1 greater than 1 less than 1 equal to attenuation of feedback circuit. इसका सही आंसर है greater than 1. Thank you.